So to find unit place of integral power of numbers. That is what we want to study today. Now, see, if you come across this kind of a situation, suppose let us say 256 raised to 25. What is the unit place of this expansion? You want to find the unit place. Unit place is what? Rightmost digit. If you want to find the rightmost digit of this expansion, then how we can find the unit place of this expansion, that we are going to understand. Now, first of all, try to understand the meaning of this number. So the meaning of this number is that 25 times multiplication of 25 times multiplication of 256. So if I want to write the expanded form of this number, so I will get 256 multiplied by 256 multiplied by 256 multiplied by 256. In this way, I will get this 256 for 25 times. Now, if I want to find the unit place of this product, so I will take the unit place of all the numbers, and how many six I will get in that fashion? 25 times. 25 times. So always keep this in mind. If you want to find the integral power of any number, that unit place of the integral power of that number, then the unit place of this expansion is always decided from the unit place of this base value. We know that we studied in our school days. So this 256 is known as the base, and this 25 is known as power. Okay, so how we can deal with this particular situation? So, but for better understanding, I divided this in three cases. So just write down case number one. Just write down case number one. So in case number one, I'm taking if unit place of base 0, 1, 5, 6, then particular case is called as power cycle of 1. अब ये पावर साइकिल ऑफ वन क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको क्विकली. नाउ सी, अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में अगर सपोज मान लो 0 है, तो इफ आई एम टेकिंग 10 का फर्स्ट पावर दैट इट इज 10, 10 का सेकेंड पावर दैट इज 100, 10 का थर्ड पावर दैट इज 1000. If I am taking 10 ka fourth power, then it is 10,000. So if I am taking any power of 10, so this is ending with 0. So that is what I am saying. अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में अगर 0 है, आप उसका कौन सा भी पावर रेस टू करते हो तो उसका यूनिट प्लेस 0 से एंड होगा. सेम इन केस ऑफ 11 ऑल्सो. 11 रेस टू 1 is what? 11. 11 raised to 2 is 121. Okay, 11 raised to 3 is 1331. 11 raised to 4 अगर आप लेते हो then it is 14641. So look at this, unit place is also 111. The same situation is applicable for 5 and 6 also. So this case number 1, I'm just writing this in this form. Suppose the unit place of base is 0, raised to anything, that number always ends with 0. In case of 1, raised to anything, this is also so ends with 1. In case of 5, raised to anything, this is also ends with 5. And in case of 6, raised to n, that ends with 6. So these number follows the power cycle of 1. और इसको कभी कभी हम बोलते हैं that is called as the cyclicity of 1. Cyclicity of 1. Just take a note of this.
Just mention done in a comment box when you complete that. Okay. So this is what this particular case is applicable for 0156. That is called as a power cycle of 1. और देखो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड. इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, दैट आई एम गोइंग टू शेयर यू नाउ. ओके. See, suppose if I'm asking now, you will give me the answer in within 1 or 2 seconds में answer दे दोगे इसका. Suppose if I'm asking you 351 raised to 98, what is the unit place of this expansion? What is the rightmost digit of this expansion? तो आपको कुछ seconds में इसका आंसर आ जाएगा. Okay, कुछ seconds में इसका आंसर आ जाएगा आपको. Yes or no? You can mention your answer in chat box. Use the chat box to give your answers, my dear friends. 351 raised to 98. What is the unit place of this expansion? What is the unit place of this expansion? Come on, it will be 1. The unit place of this expansion will be 1. Yes or no? The unit place of this expansion will be 1. Now, if I am asking you 956 raised to 23, what is the unit place of this expansion? ये unit place क्या होगा? इस expansion का unit place क्या होगा? What is the unit place of this expansion? That's it. So whatever the unit place is decided from the unit place of a base. So this is 6. 6 raised to anything always ends with 6. 6 raised to anything always ends with 6. Now, अगर ये थोड़ा सा मैं इस तरह से पूछ रहा हूँ, if I'm asking this question in this fashion, everyone try to understand this. Suppose if I'm asking you 451 raised to 64 plus 695 raised to 28 plus 925 26 raised to 31. What is the unit place of this addition? ये addition का unit place क्या होगा my dear friends? ये एडिशन का यूनिट प्लेस क्या होगा? देखो एडिशन अगर करना है तो सभी एक्सपांशन का हमें यूनिट प्लेस डिसाइड करना पड़ेगा. टेक द यूनिट प्लेस ऑफ एवरी एक्सपांशन and the unit place of the expansions are always decided from the unit place of the base value. Yes, unit place of the base value. Come on. तो इसका unit place क्या होगा? What is the unit place of this? This will be 1. 1 raised to anything always ends with 1. What is the unit place of this expansion? That is 5. What is the unit place of this expansion? That is 6. और सबका addition करना है तो सबका addition हो जाएगा 6 plus 5 11 plus 1 that is 12. 2 is a unit place of this expansion. 12 का unit place क्या हो जाएगा? 2. So 2 is a unit place of this expansion. If you are getting this, say yes in a comment box. देखो इतने जल्दी हो सकता है. क्वेश्चन दिखते वक्त इट लुकिंग वेरी हॉरिबल क्वेश्चन. It's looking a very horrible question, my dear friends. But if you know the concept, your response time will be less than 10 seconds. Now, instead of addition, if I'm using now, if I'm using, suppose if I'm asking you 256 raised to 29 multiplied by 355 raised to 91 multiplied by 261 raised to 25. What is the unit place of this multiplication? What we will do here? Now again, while doing addition, subtraction, multiplication, we used to find the unit place of all expansions together. What is the unit place of these expansions together? Yes, it is. So what is the unit place of this? Unit place of this is 6. Unit place of this expansion is 5. Unit place of this expansion is 1. There is a multiplication in between. So 6 5s are 30, 31s are 30. 30 का unit place क्या होगा? 0 होगा. Yes, Gaurav, it's correct. Very good. Yash, Rishabh, I hope you people are getting this. Now, देखो अभी देखो इस पे ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैट्रिक में. अभी थोड़ा सा मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ, रिमाइंडर की तरफ जा रहा हूँ. देखो किसी भी नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा? क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे रिमाइंडर 6 आएगा? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? इफ यू एग्री विथ मी से यस इन अ कमेंट बॉक्स. किसी भी नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो यूनिट प्लेस इज अ रिमाइंडर इन दैट पर्टिकुलर केस.
सपोज फॉर एग्जांपल 23 छोटा लेते हैं, 23 को 10 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बचेगा? व्हाट विल बी द रिमाइंडर? 3 विल बी द रिमाइंडर, 3 विल बी द रिमाइंडर। तो क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। देखो अगर 64 को ऋषभ, यश, गौरव 64 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा माय डियर फ्रेंड? व्हाट विल बी द रिमाइंडर? रिमाइंडर विल बी 4। यूनिट प्लेस itself is a remainder. Now if I am asking this question in this fashion, find the remainder, find remainder when 200 and 2856 raised to 20, 292 divided by 10, divided by 10. Within 5 seconds, you will get the answer. I am very sure. Within 5 seconds. 5 seconds enough. Come on, come on, come on. मुझे नाराज मत करना. Yes, very good, Rishabh. Absolutely correct. Absolutely correct. Yes. I hope यश आणि गौरव आपका भी आंसर 6 ही आया है. क्या होगा बेटा? 2856 रेस टू 292 और इसको आप 10 से डिवाइड कर रहे हो. 10 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है? रिमाइंडर यूनिट प्लेस ही आता है. एंड व्हाट इज द यूनिट प्लेस? इसका यूनिट प्लेस निकालना तो ये काट दो. यहाँ पे क्या है? 6 रेस टू एनीथिंग ऑलवेज एंड्स विद 6. Yes, 6 is the remainder here. 6 is the remainder here. Unit place is the remainder. Your unit place of this expansion is the remainder. Okay, Gaurav, Yash, you got this point. तो देखो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है. Either they will ask you what is the unit place of this expansion, or they will ask you what is the remainder when this number is divided by 10. Very good. तो कितने, how many digits, how many digits are following the power cycle of 1? How many digits? Which digits? That is 0, 1, 5, and 6. These are the digits which are following the power cycle of 1. These are following the power cycle of 1. तो भाई ऐसे तो 10 डिजिट्स यूनिट प्लेस पे आ सकते, उसमें से 4 हमने कंप्लीट किए. अभी देखो 4 और 9 के केस में क्या हो रहा है. Now, Yash, Rishabh, and Gaurav, यहाँ तक आपको पार्ट समझ में आ गया होता है? Quickly say yes in the comment box so that I will go to the next point. So see, when I am looking at the power of 4, power of, what is the first power of 4? 4. 4 square क्या होता है my dear friend? That is 16. 4 cube क्या होता है? 64 होता है. 4 raised to 4 क्या होता है? 256 होता है. ओके, मैं आगे भी जाना चाहूंगा. 2 raised to 5 होता है 1024. एंड 4 raised to 6 होता है 4096. ओके, कुछ 9 के भी मैं पावर्स लिखने की कोशिश करूंगा. 9 raised to 1 is 9. 9 का स्क्वायर होता है 81. 9 का क्यूब होता है 729. एंड 9 raised to 4 होता है माय डियर फ्रेंड 6561. तो अभी मैं इनको दो दो के पावर साइकिल्स में डिवाइड कर रहा हूं. तो लुक एट द यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस में आपको क्या नजर आ रहा है? 4 6 4 6 4 6. यहाँ पे यूनिट प्लेस में देखो क्या नजर आ रहा है? 9 1 9 1. फिर से कंटिन्यू होगा 9 1. So this is called as a power cycle of 2. And these are the two digits which follows the power cycle of 2, that is 4 and 9. 4 and 9 are the two digits which follows the power cycle of 2. तो और देखो इसके लिए थोड़ा सा और इस पे थोड़ा सा डीपली सोचते हैं. नाउ 1 इज ऑड नंबर. नाउ जहां पे भी आप ऑड पावर ऑफ 4 देखते हो, ऑड पावर ऑफ 4 इज एंडिंग विद 4. एंड इफ यू लुक एट द इवन पावर्स आर एंडिंग विद 6. आई होप यू पीपल आर गेटिंग दिस. तो इस तरह से केस नंबर 2 को हम इस तरह से लिखेंगे. केस नंबर 2, if unit place of base, if unit place of base is 4 or 9, that is power cycle of 2. पावर साइकिल ऑफ 2, जिसको हम साइक्लिसिटी ऑफ 2 भी बोलेंगे. साइक्लिसिटी ऑफ 2. तो उसमें क्या होता क्या है? व्हाट इज हैपनिंग देयर? सो व्हेन इट इज 4 raised to odd number, this will always ends with 4.
4 raised to even number, this will end with 6. In case of 9, 9 raised to odd, it will end with 9. And 9 raised to even, it will end with 1. और इसको याद रखने के लिए कहीं ना कहीं 4 raised to 1, यहाँ पे 4 square, 9 raised to 1 और 9 square, कितना याद रखो? Take a note of this, come on. Now see, yes, there are only two outputs, only two unit tests you will get when you are raising four. That is 4 and 6. That is power cycle of 1, power cycle of 2. What I meant to say, suppose अगर मैंने इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया, suppose if I am asking now 924 raised to 43, what is the unit place of this? तो आपको क्या देखना है? What is the unit place of this base? That is 4. And 4 raised to this number is what? Odd number. So 4 raised to odd always ends with 4. Yes, very good, Gaurav. Now suppose ये क्वेश्चन मैंने अगर इस तरह से पूछ लिया, 834 raised to 48, इस तरह से पूछ लिया. So what is the unit place here? 4. Now 48 is which kind of a number? Even number. So 4 raised to even always ends with 6. That is what I want to say. आपको समझ में आया? Come on, say yes in the comment box. ऋषभ, गौरव, यश. ओके, तो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है. नाउ 9 के केस में सी 329 raised to 93. So if I am asking what is the unit place of this, what is the unit place of this? So यहाँ पे कितने भी डिजिट का नंबर देखो, बेस में कितने भी डिजिट का नंबर है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, because your unit place is always decided from the unit place of a base. So for 9 raised to 93, 93 is which kind of a number? This is odd number. So 9 raised to odd always ends with 9. And 9 raised to even always ends with 1. Now, how many digits we completed here? How many digits we completed? In power cycle of 1, we have seen 4 digits. In power cycle of 1, we have seen 4 digits. That is 0, 1, 5, 6. In power cycle of 2, we have seen 2 digits. That is 4 and 9. Now, which digits remain? कौन से digits बाकी है? Digits remain are 2, 3, 7, 8. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है 2, 3, 7, 8. 2, 3, 7, 8 के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट इट डाउन. Always remember, my dear friend, perfect square numbers, perfect square numbers never ends with, never ends with 2, 3, 7, 8. हमेशा याद रखना, परफेक्ट नंबर्स के एंड में कभी 2, 3, 7, 8 आता ही नहीं है. यू कैन ऑब्जर्व, ऑब्जर्व कर लेना आप. परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है. देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 7 का स्क्वायर 49 है. Okay, now 6 4 square is 16 है and 6 square is 36 है and 5 का square 25 है. कहीं नजर आया आपको? Have you come across 2 3 7 8 in the unit test? आगे भी देख लो, 11 का स्क्वायर 121 है, 21 का और 19 का स्क्वायर है 361, 12 का स्क्वायर है 144 एंड 18 का स्क्वायर है 324. नाउ 13 का स्क्वायर है माय डियर फ्रेंड्स 169 और 17 का स्क्वायर है 289. नाउ 14 का स्क्वायर है 196 एंड आपका 16 का स्क्वायर है 256 एंड 15 का स्क्वायर आप तो जानते ही हो, दैट इज 225. सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, द परफेक्ट स्क्वायर नंबर नेवर एंड्स विद 2 3 7 8. हमेशा याद रखना. तो इसमें क्वेश्चन कैसा है देखो, इसका 2378 कौन से पावर साइकिल फॉलो करता है देखेंगे अब. लेकिन ये ग्रुप में, ग्रुप के बारे में 2378 के बारे में कुछ मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ. नाउ अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, ट्राई टू गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
which of the following can be a perfect square? Now, without finding the square root, is it possible to give the answer? Yes, it is. I'm giving the options also. Okay. So 2, 3, 7, 8. Second option 8, 4, 3, 2. Third option 6, 5, 6, 1. And fourth option 9, 3, 8, 7. Now tell me which of the following can be a perfect square? Mention your answer in the chat box. Whatever the property I just told you now. The perfect square never ends with 2, 3, 7, 8. और अगर वेरी गुड गौरव अगर वो यूज करते हो तो विद इन लेस देन 10 seconds you will get your answer. Yes, yes, very good, Rishabh. Come on, Yash. Okay, now see what is the unit place of this? Unit place of this is 8, तो ये कभी perfect square हो ही नहीं सकता. Unit place of this is 2, तो perfect square हो ही नहीं सकता. Unit square of this is 7, perfect square हो ही नहीं सकता. तो ये perfect square होना ही चाहिए. उस पे ज्यादा सोचो मत. You got your choice. You out of 4 you eliminated 3. Left door is the answer option, my dear friend. Keep this in mind. Now, what about the power cycles of these numbers? ये नंबर्स के पावर साइकिल्स के बारे में हम सोचने की कोशिश करते हैं. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. यश रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स सो दैट आई विल बी श्योर दैट यू आर इन द क्लास. ओके, नाउ देखो पावर साइकिल ऑफ 2378 के केस में क्या होता है. व्हाट हैपेंस इन 2378? आई एम राइटिंग सम पावर्स ऑफ 2 नाउ. ओके, सो पावर्स ऑफ 2 कैसे आते हैं देखो, एक बार देखो. 2 रेज़ टू 1 is 2, my dear friend. 2 square is 4. 2 cube is 8. 2 raised to 4 is 16. Now 2 raised to 5 is 32. 2 raised to 6 is 64. 2 raised to 7 is 128. 2 raised to 8 is 256. Okay. आगे भी मैं लिख सकता हूँ लेकिन मैं जगह नहीं है यहाँ पे. 3 के कुछ पावर लिख लेता हूँ. 3 raised to 1 is 3. 3 square is 9. 3 cube is 27. 3 raised to 4 is 81. 3 raised to 5 is 243. 3 raised to 6 is 729. 3 raised to 7 is 2187. And 3 raised to 4 is 6561. Now I am dividing this in a group of 4 4. 4 4 के ग्रुप में मैंने डिवाइड कर लिया. देखो कैसा इसका पावर साइकिल कैसे काम कर रहा है. यूनिट टेस्ट, लुक एट दिस यूनिट टेस्ट. 2486 2486 3971 3971. So this is called as power cycle of 4. This is called as power cycle of 4, or you can call this as cyclicity of 4. Cyclicity of 4. And same pattern is followed in case of 7 and 8 also. Take note on these powers, come on, note on these powers. Yes, my dear friends. So this, see, पहले हमने 4 digits देखे. Those are following the power cycle of 1. That is 0156. After that, we have seen 4 and 9 follows the power cycle of 2. And these are the 4 digits which follows the power cycle of 4. Power cycle of 4. Hmm. ओके, नाउ देखो इसको एक एग्जांपल लेके पहले समझ लेते हैं इसको कैसे करेंगे हम. एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं एंड देन वो केस हम लिख लेंगे. केस नंबर 3. Now, for example, suppose if I am coming across this kind of a situation, 32 raised to, let us say, 17. हाँ अभी मैं क्या, भाई क्या मेरा प्रयास क्या रहेगा. I will try to break up this 17 in such a way that इसका एक मल्टीपल, एक नंबर एक इसमें से 12 4 के मल्टीपल में आना चाहिए. Now this is, can I write this as
Can I write this as 32 raised to 17? Can I write this as 32 raised to 16 multiplied by 32 raised to 1? By the rules of indices, if the base is same, then we used to add the powers. Can I write it this fashion? Come on, give me confirmation. Yes, I can. Now, what is the unit place? Fourth, see, 2 का fourth power हमेशा 6 में add होता है. So, what is the unit place? This is 6. And what is this? 2 raised to 1. 2 raised to 1 always ends with 2. 2 raised to 1 always ends with 2. So, what is 6 twos are? 6 twos are what? 6 twos are what? 12. Unit place will be 12. Unit place will be 2. I hope you understood this. I hope you understood this. तो इसको और थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं. What I will do in this particular case, I will try to divide this 17 by 4 and divide this 17 by 4. So what is the remainder? When you divide this 17 by 4, that remainder will be 1. So your answer will be 2 raised to 1. What is 2 raised to 1? 2. I hope you understood this. ये आपको समझ में आया होगा तो यस बोलो. अगर नहीं समझ में आया तो मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ. चलो और एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल 87 रेस्ट टू 23 लेना है मुझे. 87 रेस्ट टू 23. नाउ यहाँ पे यूनिट प्लस 7 है तो 23 को 4 से डिवाइड करो. 23 को 4 से डिवाइड करने के बाद क्या क्या रिमाइंडर बचेगा? व्हाट इज द रिमाइंडर? व्हेन यू डिवाइड दिस 23 बाय 4 योर रिमाइंडर विल बी 3. व्हाट इज 3 का क्यूब? 3 का क्यूब 443 343 होता है. So unit place of this is 3. So 80 क्या है? 87 raised to 23. This complete का unit place 3 हो जाएगा. I hope you got this. I hope you got this. Rishabh, Yash, do you got this point? Okay. Now और एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं. Suppose if I say 2 8 let us say 8 raised to let us say 26. तो क्या करेंगे हम? We want to decide the unit place. Now unit place is 8 here. So divide this by 4. Why we are dividing this by 4? Because this follows the power cycle of 4. ये power cycle follow कर रहा है 4 का. Power cycle of 4. So divide this by 4. What will be your remainder? That is 2. That is your new index. So 8 raised to 2. What is 8 raised to 2? 64. 64 का unit place क्या होगा? 4. So we can say that 288 raised to 26. The unit place of this whole expansion is 4. Unit place of this whole expansion is 4. Okay. Keep this in mind. Okay. चलो फिर लिख के लेते हैं इसको. So case number 3. Case number 3. If unit place of base is 2, 3, 7 or 8. Now just write down here power cycle of 4. Power cycle of 4. Or we can say cyclicity of 4. Okay. The cycle. This is cyclicity of 4. Power cycle of 4. Now what we have to do here? 2 steps you have to follow. Step number 1. Divide power by 4 and find remainder. Step number 2. Remainder will be new power. Remainder will be new power. Then unit place of base raised to remainder. हो गया. एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं. एक एग्जांपल और आपको समझाने के लिए मैं लेता हूं यहाँ पे. Example, for example, suppose if we have taken 328 raised to let us say 42. So what we will do now here, just remove this. This follows the power cycle of 4. So divide this by 4. तो डिवाइड करने के बाद आपका 2 रिमाइंडर बचेगा. सो 8 स्क्वायर क्या होता है? 64. 64 का यूनिट प्लेस हो गया 4. सो 328 raised to 42. This number ends with 4. This number ends with 4. Take a note of this.
नाउ इसमें कुछ एक्सेप्शन रूल जरूर है, एक्सेप्शन रूल जरूर है। कैसे एक्सेप्शन रूल है? इफ यू कंप्लीटेड दिस राइटिंग देन एक्सेप्शन रूल क्या है यहाँ पे? देखो अभी सपोज इफ आई एम टेकिंग द सिचुएशन लाइक दिस, ओके, if I'm taking the situation like this, suppose if I'm saying 387 raised to 48, what is the unit place of this expansion? Now, what is the unit place here? 7. 7 के केस में पावर साइकिल ऑफ 4 फॉलो करता है, तो इसको 4 से डिवाइड करो। हम इसको 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज 7 फॉलोज द पावर साइकिल ऑफ 4, पावर साइकिल ऑफ 4। ओके, 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 रिमाइंडर आएगा, बिकॉज 48 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। 7 raised to 0, as per rules of indices, 7 raised to 0 is 1. So what we can say, 880, 387 raised to 48, the unit place of this expansion will be 1. I hope you people are getting this. अभी थोड़ा एक्सपेंशन एक्सेप्शन रूल कैसे काम करेगा इसमें? सपोज यही अगर इस तरह से आता है, लेट अस से 82 रेज टू 24, अगर इस तरह से आता है, so if you find the new power here, so unit place is 2 here, this number is completely divisible by 4 when this power is completely divisible by 4. This is divisible by 4. In case of 2, in case of 2 and 8, then the unit place of the whole expansion, you can take it 6. Okay, क्योंकि देखो 2 raised to 4 आया था हमारा, 16 आया था, 2 raised to 8 होता है 256, then 2 raised to 12 होता है 4096। तो आप जब भी 2 का अगर 4 के मल्टीपल में कोई पावर लेते हो, तो उसका यूनिट प्लेस क्या होता है? 6 होता है। यहाँ पे 1 नहीं लेना है, तो यहाँ पे 6 ही लेना है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो इस तरह से पावर साइकिल्स काम करते हैं, माय डियर फ्रेंड। So we will continue this topic in tomorrow's session also. Try to revise this particular topic. जो भी मैंने आपको concept बोले हैं, just go through that concept and try to solve the questions on that. Okay. Thank you very much for listening me very patiently and politely, my dear friends. Let us meet tomorrow, same time. Thank you. Bye bye. Now see, in today's session, we have to learn how to find unit place or unit place of integral power of numbers. Okay, how to find the unit place of integral power of numbers. That is what we are going to learn in today's topic. Let me stop this whiteboard. I am sharing one PowerPoint presentation. So to find